The civilization was corrupted and debased human nature, so it robbed both political and personal liberty of man. नाउ रूसो ऑन इनइक्वालिटी, उनका जो सेकंड बुक है जो डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ही हैज टॉक्ड अबाउट इनइक्वालिटी इन रिसोर्सेज, मतलब इन सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल द इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय पीपल इज अ फीचर ऑफ मॉडर्न सिविल सोसाइटी एंड नॉट नोन इन द स्टेट ऑफ नेचर। सो ही वॉज नॉट अ पर्सन, रूसो ऐसा इंसान नहीं था जो कि सिविल सोसाइटी के फेवर में था। रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इज व्हाट, इनइक्वालिटी होता कैसे है, असमानता आती कैसे है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, खुद का जो प्रॉपर्टी है लोगों के पास उसके वजह से इनइक्वालिटी आता है। इंडिविजुअल पोसेसिंग सुपीरियर नेचुरल एबिलिटी एक्वायर्ड मोर रिसोर्सेज कॉजिंग इनइक्वालिटी। ऑफ कोर्स जो सुपीरियर है, जिनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा एबिलिटीज़ है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, और ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। वेल्थ, दौलत, ओहदा, पावर, शक्ति, पर्सनल मेरिट्स है, जो खुद के जो कामयाबियाँ कामयाबी है खुद के अंदर जो लोगों की, ये सारा डायमेंशन है इनइक्वालिटी का। Instead of self love, people started living in the opinion of others and develop ego. खुद से प्यार करने की जगह लोग दूसरों के ओपिनियन के बारे को देखते हुए जीने लग गए थे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग जीने लग गए थे। ईगो भी इसीलिए आ गया था लोगों में। पैशन तो था, डिजायर भी था, साथ साथ जेलसी भी इसीलिए फॉर्म हो गया था। अगर आप दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो जेलसी इसी में आ जाता है फिर। देन conception of state based on individual right and negative freedom is immoral, unjust and unequal state. ओके, इंडिविजुअल का राइट है, लेकिन अगर फ्रीडम को, अगर नेगेटिव फ्रीडम अगर आ जाता है, अगर इंसान के पास नेगेटिव फ्रीडम, कैसे नेगेटिव फ्रीडम है कि वो जितना भी प्रॉपर्टी वो क्योर कर रहा है, क्योर कर ही ले रहा है, खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ता ही जा रहा है अगर किसी का, तो दैट कैन बी अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव फ्रीडम। सो अकॉर्डिंग टू रूसो दैट इज इमोरल, अनजस्ट है और ऑफ कोर्स अनइक्वल स्टेट है। नाउ वी कम टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो। प्री सिविल सोसाइटी एज, स्टेट ऑफ नेचर, नॉवल सैवेज, मतलब सिविल सोसाइटी के पहले जो था स्टेज, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या था, वो करप्ट कर दिया था ह्यूमैनिटी को। हाउ टू रिफॉर्म सोसाइटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, टू गेट वर्ड, टू फॉर्म freedom and authority, reason and feeling, justice with utility, modern life, and to somehow lessen the number of inequality, इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी को हटाना, फ्रीडम का रिकॉन्सिलेट फॉर्म करना फ्रीडम को। तो रूसो ने फिर लाया अपना सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। पीपल एज इक्वल एंटर इनटू कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी सारे इंडिविजुअल है लिविंग इन द स्टेट, ऑल इक्वली एंटर इनटू दिस, agreed and equally entered in this contract with others and act with all to form community, republic or body public, साथ साथ सब फॉर्म किए व्हाट, community। individuals subsume their power, right, possession, identify to community and become its indivisible part। okay। सबके पास पावर्स रहते हैं, राइट रहते हैं, और इसी तरह ही वो लोग कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। व्हाट दे गेन, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद क्या उनके पास क्या मिल, ऐसा क्या आ जाता है कि कॉमन फोर्स फॉर प्रोटेक्शन, उनके पास एक कॉमन सोर्स रहता है प्रोटेक्शन के लिए। इक्वल सिटीजनशिप रहता है, सॉवरेनिटी रहती है, कोई अलग फोर्स इंटरफेयर नहीं करेगा, ये स्टेट अपने अकॉर्डिंग चलेगा। सिविल लिबर्टी का फॉर्मेशन होता है, मॉडल फ्रीडम होता है, आइडेंटिटी मिलती है उन लोगों को, और एक वर्ड जस्ट और मॉडल स्टेट का फॉर्मेशन होता है। The community, all the people together, each of its members are directed by what? General will. Now, this is the term that you all need to remember. General will को बहुत ही ज़्यादा importance दिया है रूसो ने। General will क्या है according to him? Common good. अगर will, general will अगर लोगों का पूरा हो रहा है तो वो common good है। By obeying laws flowing from general will,
Members are obeying themselves as they gave themselves those law which are just, moral, serve common good, they gain moral freedom. So that is why how जनरल विल इज इम्पोर्टेंट. जनरल विल वही है जो कि लोगों ने खुद से डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट में कि वो कैसे फॉलो, क्या क्या रूल्स बनाएंगे, लॉ बनाएंगे और कैसे फॉलो करेंगे, वो लॉ फॉलो हो रहा है. वही लॉ ही इन लोगों का सबका विल है. So that is only the general will. If general will is for fulfilled, then there is formation of what common good. Now, what are the feature of social contract of Rousseau? A logical imagination, of course, imagination ही है उनका, imaginative contract है ये. Not a one time event but continuous process है ये. Contract का formation, इसमें laws change भी हो सकते हैं, पोजीशन पीपल का चेंज हो सकता है. सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. नाउ वी कम टू पॉपुलर सोवेनिटी. पॉपुलर सोवेनिटी जनरल विल के साथ साथ रूसो ने पॉपुलर सोवेनिटी को भी इम्पोर्टेंस दिया था. द कम्युनिटी इज सॉवरेन, ईच ऑफ इस मेंबर ओन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोवेनिटी. सॉवरेन है जो ये सॉवरेनिटी जो है, इक्वल फ्रैक्शन में सबके पास वो सॉवरेन है, सब अपने में सॉवरेन है. सो that's why it is a popular sovereignty. And sovereign, we know that no other people outsider can interfere in the state processes. As citizen of the community, one get back both political and personal liberty. Community के पास होने के बाद political और personal liberty भी मिल जाता है. Political liberty not dominated by any other power, obey only himself. कोई अलग power, outside power cannot control them. They have own liberty. Personal liberty, as citizen develop love for others community guided by his higher self mastery inner moral freedom. Now what is the personal liberty? That we have developed love for others also, and community, love for community. Okay. Thus, social contact is a device to unite liberty with authority. Liberty है लेकिन with authority, reason with feeling, morality with rationality, public interest, justice with self interest. Now, what are the will and its types? What is the meaning? Inner mechanism to choose among desire, want, wishes, and craving. Will is what are only desire, wants, and wishes. Positive force for controlling and using one's instinctual drive, motivating factors in human behavior. Positive force for controlling and using one's instinctual drive, motivating factor in human being. What are the types? Now there are real or true will, actual will, private and individual will, corporate will, and general will. General will is only the one which Rousseau has given importance. You study, read all the above wills. I am talking about general will. General will is represent collective will of a political community at a political level, at a community level. Politically, what is the will of the people? It is always right, just, moral, and for the purpose of common good. You have to remember that general will, whenever we talk about general will, it is for common good only at the level of community. General will is the synthesis of real will. Okay. Embodiment of altruism. It represents sovereignty of community formed by social contact. What are the features of general will now? Represent collective will of the community at a collective level. The wishes of the desire of the community are presented. It is just है, इसमें कोई injustice नहीं होता, just है. And for the purpose of common good of the people of community, citizen acting just and moral arrive at general will. General will कब accept होता है? When all the citizens are just in themselves and moral, and they accept the will which is always right and represent common or public good, voice of all, for good of all, by the people only and for the people only. General will is not aggregation of particular or private will of community. It represents real will of community members. It is not any particular will or private will. It is the real will. It represents the real. सच में जो will है, सच में जो desire है,
of all the people at general level, that becomes general will. The general will is not determined on the basis of number of voters, but it is determined on what, जितने लोगों ने वोट किया है उनका इच्छा जनरल विल नहीं होगा, वो क्या होगा, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल यूनाइटेड टुगेदर will be the general will. Sorry. जनरल विल इज पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ नोबल सैवेज। नोबल सैवेज में हम लोग देखा था सेल्फ लव एंड कंपैशन फॉर अदर्स, उसी का पॉलिटिकल एक्सपेंशन इज ओनली जनरल विल। हेंस मॉरल फ्रीडम इज ओबीडियंस टू द जनरल विल because one is obeying to the its real self by obeying general will. Thus, obeying law flowing from general will is real freedom in moral sense. फ्रीडम कब है, जब हम लोग रियल जनरल विल को फॉलो कर रहे हैं इन मॉरल सेंस, एट वन इज ओबेइंग द लॉ दैट इज ऑफ कोर्स मेड बाय हिम ओनली, वो लॉ फॉलो करे जो उनके द्वारा ही बनाया गया, उनके लिए ही बनाया गया है, एंड उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया है। नाउ व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? What are the pluses? Brilliant attempt to reconcile liberty. लिबर्टी को एक अच्छे से फिर से अगर लोगों को प्रोवाइड करने के लिए विदाउट इनजस्टिस एंड जस्ट लेवल, दिस वाज एन ब्रिलियंट एफर्ट। इसमें पॉपुलर सोवेनिटी भी देखा हमने कि कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिटीजन एज द ऑथर ऑफ लॉ, सिटीजन खुद ही जिम्मेदार है लॉ को बनाने के लिए और गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, और उन्होंने मोर ऑफ what they have only they have only formed the contract for themselves. Okay, general will को बहुत ही ज़्यादा important दिया है। this popular sovereignty question में आया, general will आया, you have to always choose Rousseau. truly egalitarian, disregard to private property, equal citizen. Now what are the minuses? Utopia, not feasible for large complex modern nation state. ये जो अप्लाई इनका जो थ्योरी है वो at larger level we cannot apply. वेग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इनको। ओके, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी एंड जनरल विल मे बी मिस यूज भी किया जा सकता है अगर पॉजिटिव लिबर्टी सबको मिल रहा है उनका थ्योरी, सो दैट्स वाई it is one of the disadvantage also. Idea of homogeneous community as organic whole of which individual is an indivisible part undermine individual autonomy. अगर सब इंडिविजुअल के पास इक्वल राइट है, इक्वल लेवल पर लिबर्टी है, तो इक्वल इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होने का भी चांसेस है। सो चूजिंग इलेक्टिव एरिस्टोक्रेसी ओवर डायरेक्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। टू मच इम्पोर्टेंस टू इमोशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था इमोशन को, फीलिंग को ओवर रीजन एंड रैशनैलिटी। ओके, एंड पैटर्नलिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।